Welcome to Gandhara People Teacher Online Study Point, and today we are going to study about program learning instructions or programmed instructions. So, program instruction is a self-instructional method. From the very beginning, educationists have been trying to find different types of teaching learning processes that can be used as innovation in teaching learning process by using different kind of psychological principles. So, one of the principles is used from by B.F. Skinner, a programmed instruction. It is a self-instruction method in which you can say that by using principles of operant conditioning and schedules of reinforcement, a self-learning program has been prepared by, you can say, it is a kind of teaching machine. Okay, let's go into the deeper meaning of program learning. So, in this arrangement of material is used the you can say the subject is used as a stimulus, and the presentations have been given in such a way that students should respond and they learn by resulting into the optional behavioral objectives which have been prescribed in the given lines. Let's learn in a simple language what program learning is. Suppose we want to teach any topic. Suppose we want to teach parts of flowers. Okay, so these parts of flower topic is will be break into small sequences. Student have to learn, or you can say for every step a stimulus is given and there will be response, and if the response is correct they will be given reinforcement and they will be given next stimulus, and by this process of stimulus response, ultimately they will learn and behavioral change will occur. So this kind of programming is done in which the material is organized as a form of stimulus. Okay, so let's see, there are different types of programming are there which will be learning in further slides. Now first of all we would like to learn some characteristic of program learning materials. So first of all, it is a part of educational technology and it can be presented with the help of machines. Second, it is newly strategy, fully verified and valid. It is a technique for solutions for educational as well as teaching problems. Suppose a teacher is not there, you can run a program for students so they can learn on their own. Fourth is, it is the in micro teaching, the teacher's behaviors modification is done. Same as opposite in this, the modification of learner's behavior is done, but the program learning material never replace the teacher because only effective teacher can prepare a good program. Important part is it is always based on psychological theories, and three elements like stimulus, response and reinforcement, they always remain active in any kind of program learning material. And it's always provide remedial instructions after diagnosing the weakness and difficulties of the student. That is also very important, because like the teacher, when he or she diagnose the student's weakness, they prescribe certain remedies and remedial classes for the students. In the same way, this remedial instruction is also given in program learning materials. Now let's go on to the principles of programs instruction. First of all is principle of small steps. So any information will always be given into small steps, which is called sequence of frames. Frames is the small steps. Active participation and responding. The program learning based detail is completely based on stimulus and response, because response is always required. Reinforcement, positive or negative, in program learning material student will always get reinforcement. Then it is the principle of self-pacing, because every individual has their own learning pace, and the program learning material is individual always. Only one individual learns at a time. So the principle of self-pacing is there, that any student can learn on their own pace.
Here the principle of self evaluation is there. The principle of self evaluation says the student get immediate feedback as well, and they can evaluate their responses whether they are right or wrong. So these are the main principles on which all the programs of learning materials have been prepared. Now let's go to the chief elements of programmed learning material. So like first of all, first one is stimulus response. In programmed construction, the contents is presented in small sequences, logical sequences. So and a response is given by the students to prepare a student for studies, to impart knowledge, and to provide reinforcement. So stimulus as response will always be helpful for behavioral change. Then the second element is behavior and behavior repertoire. By behavior, we mean those activities which students perform in order to realize the instructional objectives. So the total response of the organism, and behavior repertoire means the same several responses arranged in a logical manner. So behavior is very important for stimulus and response. Third is reinforcement. Reinforcement is always given, maybe positive, maybe negative. If positive, it can be for strengthening the behavior. If negative, it is always to decrease the undesirable behavior. So negative is given for decreasing the undesirable behavior. Now transfer of stimulus can be, you can say, stimulus control. In transfer of stimulus control, first of all, I would write here negative means responding to undesirable. No punishment is there, but it allows, you can say it is given to decrease to undesirable behaviors. That is, that comes under negative reinforcement. Then transfer of a stimulus control is there, and suppose you can say there is a response, the responses student make in the beginning of program instructions, he is acquainted with them. So you can say there is a chain of stimulus control, because stimulus, first stimulus always carry to help give some response, and then entering behavior to the ultimate behavior. Thus stimulus control proceeds in the sequence of learning. The process is called transfer of stimulus control. Suppose one stimulus is presented, a response is getting there. One stimulus is presented, a response is getting there. So always there is some stimulus to the response, and this chain is called transfer of stimulus control. Now feedback. Feedback is a process in which students are acquainted with their shortcomings, their errors, and their weakness, so that students can always improve upon them. Now, prompting and directed discovery. Prompting means an information contained in the frame which help learner to respond. Actually, it is directed discovery. It means clues for getting right paths in the programs. प्रॉम्प्टिंग मीन्स मतलब एक तरह का क्लू आपको प्रोग्राम में मिलता है कि आप राइट ही सेलेक्ट करो ऑलवेज. ओके, दैट इज दिस थिंग. Confirmation is also called the third theory of instruction. It is the form of feedback in which students learn new knowledge and it get reinforcement again. Right responses are always confirmed immediately so that student can go ahead. So confirmation is important to go ahead in the program. Now next is generalization and discrimination. So different situations are produced in different responses. Ability of student for gaining knowledge, skills or attitude under one situation and apply it to another situation is for similar elements is called generalization. So mm, generalization means stimulus 1, stimulus 2, stimulus 3 will all get simple same response. This is generalization. And different responses
for different stimulus, response 1, stimulus 2 के लिए response 2 एंड स्टिमुलस 3 के लिए response 3. सो अलग अलग स्टिमुलस के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स, ये होता है डिस्क्रिमिनेशन. और सारे स्टिमुलस के लिए अलग अलग स्टिमुलस के लिए एक ही रिस्पॉन्स, क्योंकि वो जनरलाइज कर देना. तो समटाइम्स जो स्टूडेंट्स होते हैं जनरलाइज एक स्पेसिफिक फैक्ट्स के थ्रू वो एग्जाम्पल्स यूज़ कर लेते हैं. और डिस्क्रिमिनेशन में वो क्या करते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस अलग अलग रिस्पॉन्सेस के लिए प्रोड्यूस की जाती है. तो जब प्रोग्राम बिल्ड किए जाते हैं तो जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनाइजेशन दोनों ही तरीके से स्टूडेंट्स को लर्न करना सिखाया जाता है. ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, gradual progression means the student will always learn from easy to complex. First of all, simple questions will be given and then complex question will be given. Next is approximation. Successive approximation means that in program learning material, the responses students make in the beginning are reinforced. The activities needed here for arriving the ultimate behavior are divided always into small steps, and providing reinforcement at each step on the basis of successive approximation, a learner is led to the ultimate behavior. So successive approximation means positive reinforcement till the ultimate behavior changes given to the student. Diagnosis and remediation. Suppose the principle of diagnosis and remedy, it means कि program, if a student makes an incorrect response, his difficulty, mistakes or weakness is made out, he is given directly the, first of all, if they are diagnosed, and then remedy is provided and he gets suitable guidance from the material, so with that he can improve it. Okay, there is important point here, that is retrogressive chain, and this is used in mathematics programming. I will tell you in the next slides. So this chain is there. Sometimes the instruction begins not from 100 to 1, from 100 to 1, backward, like you say it's a backward counting. Suppose somebody has to learn first 100, then 99 until then 1. इस तरह की लर्निंग में रेट्रोग्रेसिव चेन को कहा जाता है. इन सिंपल मैथ्स वगैरह में ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है. Then the programmed context or program text is set of program learning material produced in form of printed text. तो यहाँ पे जो आपका कंटेंट है वो प्रिंटेड टेक्स्ट में भी अवेलेबल कराया जाता है. And learner controlled instructions, that is very important because it should be used when commencing to make instruction. It helps in making instruction स्टूडेंट ओरिएंटेड. अगर हम इस तरह के इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में तो वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होते हैं, स्टूडेंट्स की मतलब हेल्प करने के लिए होते हैं. Okay, so these are the elements of program learning which any programmer will always keep in their mind when they program any kind of learning material. Now, development of program material. How we developed a program material? So there are three main phases. First is preparatory phase, second is development phase, and third is testing and evaluation. Now, in what we do in preparatory phase, first of all we will select the topic. So we will select what kind of topic we have to prepare. Is any program already available there in the topic? Can that topic be effective? Is the topic suitable for the system? So we will select the topic. Then we will write about the previous knowledge of the students. So we will previous knowledge, like we will age, class, interest, abilities. सो हम स्टूडेंट्स की प्रायर इन्फॉर्मेशन रखेंगे कि हम किन के लिए ये प्रोग्राम्स फॉर्म कर रहे हैं. देन राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स. तो जो भी हम लिखेंगे उसके बिहेवियरल टर्म्स में क्या क्या बच्चों में चेंजेस आएंगे आफ्टर डूइंग द प्रोग्राम. वी विल राइट इन बिहेवियरल टर्म्स व्हाट बिहेवियरल चेंजेस द स्टूडेंट विल गेट आफ्टर doing or after learning this program. And fourth is the construction of criterion test. So under this stuff the objective will be kept, criteria of learning will be selected so that student will get
criteria of learning is selected so the student can get maximum behavioral changes output. Now, how we write the program? In this, there are three: designing of comprehensive frame. So frames is a small sequence of information. So we will design our information in frames. Frames can be dependent in teaching frames, which are used to present new content. About 60 to 70% frames are of different types. So teaching practice frames, after taughting the new content knowledge, practice frame will be there. And then testing frames aimed at evaluating the learned knowledge. So frames are designed differently. Then frame sequencing. So sequencing frames, that there will be different sequences, and there are different techniques, that is matrix technique, roulette technique, and egg drill technique. So you will do higher studies like M.Ed and all, you are going to learn about matrix, ruler, egg drill techniques. But uh, for this video, I'm only going to tell you only the names of those techniques by which we do the sequencing of the frames. Now next is writing the initial draft. So editing is there. Editing is done in this. Language specialists are there to locating grammatical errors or spelling errors. Assistance of program specialists done for constructions of frames, so there are no technical error in the content. So when initial draft is there, you can say experts opinion have been by taken. So for writing, or you can say rechecking the program written. Now next is testing and evaluation phase. The testing is different. Testing is individual tryout. In this program is admitted to 4 to 5 students. 4 to 5 स्टूडेंट्स में दे देते हैं और उसमें चेक कराते हैं कि बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. इस तरह से स्मॉल ग्रुप ट्राई आउट होता है, इसमें 10 to 20 स्टूडेंट्स को दे देते हैं प्रोग्राम चलाने के लिए, देखते हैं करने के लिए. उसके बाद फील्ड ट्राई आउट होता है, तो ये रैंडम सैंपल्स में चेकिंग करते हैं कि रैंडमली लार्ज स्केल पे देते हैं ताकि वो क्या करने के लिए, टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट. एक तरह की ये आप ऐसे समझ लो कि ये यहाँ पे रैंडम टेस्टिंग करते हैं. एंड इवेल्युएशन फेज में क्या है, यहाँ पे आपका एरर रेट चेक होता है. यहाँ पे एरर रेट, प्रोग्राम का एरर रेट चेक किया जाता है कि कितना परसेंट करेक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है. प्रोग्राम डेंसिटी चेक की जाती है. मतलब इसमें प्रोग्राम डेंसिटी का मतलब है डिफ़िकल्टी ऑफ प्रोग्राम चेक किया जाता है कि कितना डिफ़िकल्ट है, अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें. एंड सीक्वेंस प्रोग्रेशन का मतलब होता है इसमें स्कोर्स के बेसिस पे एक स्केलोग्राम फॉर्म किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि हमारे इस प्रोग्राम से बच्चों में कितनी प्रोग्रेशन हो रही है. एंड अगर उनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो यहाँ पर वो रीप्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लॉन्च कर देते हैं. सो दिस इज़ द टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन फेज. तो एक बिल्कुल फुल वैलिडिट कह सकते हो, फुल्ली वैलिड होता है, बहुत ऑथेंटिक तरीके से ये प्रोग्रामिंग्स की जाती हैं. टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, तो इसमें 3 तरह की बेसिकली प्रोग्रामिंग्स हैं. पहली प्रोग्रामिंग है लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग में इसमें क्या है कि छोटे छोटे कंटेंट आप बच्चों के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं और बच्चों को उसका रिस्पॉन्स दिया मतलब वो बच्चा जो है वो उसके लिए आंसर्स करता है. अगर उसका आंसर सही होता है तो वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता है राइट रिस्पॉन्स के लिए. उसको एक अगर उसका करेक्ट होता है तो उसको एक रीइंफोर्समेंट मिलता है एंड वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाता है. अगर उसके और इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसको सेकेंडली क्या करना होता है. इस तरीके से एक लीनियर फॉर्म में वो अल्टीमेटली अपना बिहेवियर प्राप्त कर लेता है. एक यहाँ पे एंटरिंग बिहेवियर होता है जिस नॉलेज के साथ वो प्रोग्राम में एंटर करता है. एंड उसके बाद जब वो रीइंफोर्समेंट लेते लेते नेक्स्ट प्रोग्राम में जाता है तो इस तरीके से वो एक चेन के थ्रू अपना अल्टीमेटिव बिहेवियर प्राप्त कर लेता है. तो दैट इज़ द काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग. ब्रांचिंग प्रोग्राम में क्या होता है कि देयर इज़ अ
MCQ टाइप क्वेश्चंस, देर विल बी वन क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड एंड उसके 4 आंसर्स होते हैं। इसमें से एक आंसर करेक्ट होता है, जो आंसर अगर करेक्ट होता है तो उसको नेक्स्ट रिस्पॉन्स पे ले जाता है, अगर वो आंसर रॉन्ग होता है तो ये वापस उसको रिपीट करा देता है उसी क्वेश्चन को जब तक आपने करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं ले लिया। और जैसे ही वो करेक्ट रिस्पॉन्स ले लेता है उसके बाद वहाँ पे वो फाइनली वहाँ पे जल्दी जल्दी पहुँच जाता है। इसमें क्या होता है कि एरर के चांसेस कम होते हैं क्योंकि बच्चे के पास आंसर ज़्यादा होते हैं, तो एरर के चांस कम होते हैं। और कहते हैं कि इसमें जो होशियार बच्चे होते हैं वो ज़्यादा बेहतर कर लेते हैं इन कंपैरिजन टू, यू कैन से इन कंपैरिजन टू द जो वीक चाइल्ड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि रिपीट सेक्शंस काफ़ी होते हैं और स्टूडेंट्स जो है फाइनल फ्रेम पे डायरेक्टली आ सकते हैं। इसमें अलग अलग फ्रेम्स में जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। इसमें एक एक के कई पार्ट्स होते हैं, मतलब ये डायरेक्टली फिर मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से अगर उनको लग रहा है कि इजी है तो वो डायरेक्टली फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी रेडी होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो फ्री होते हैं फाइनल फ्रेम को अराइव करने के लिए। वो अपनी पाथ को भी यहाँ पे चुन सकते हैं कि वो डायरेक्टली जाना चाहते हैं कि सारे आंसर्स करने के बाद स्टेपली जाना चाहते हैं, या इनके पास एक स्पेशल टेस्ट होता है इसको देकर वो डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। कुछ इस तरह की प्रोग्रामिंग यहाँ पे बनती है। थर्ड लेवल की प्रोग्रामिंग है जिसे मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये बेसिकली बेस्ड होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, प्रॉम्प्ट और रिलीज के मेथड पे। तो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट कराया जाता है इस प्रोग्रामिंग में किसी को भी, मतलब जो भी प्रोग्राम है उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करा जाता है, क्वेश्चंस के आंसर को पहले ही डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं, फिर वो प्रॉम्प्ट करते हैं और उसके बाद जब वो मास्टरी ले लेते हैं तो तब वो उनको उसको रिलीज करते हैं। तो ये एक तरह से होल टू पार्ट की थ्योरी को मानते हैं, या आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टू ईजी की तरफ जाते हैं। यहाँ पे देखिए पहले स्टेप में प्रॉम्प्ट करेंगे, फिर रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर करेंगे और उसके बाद फिर इस तरीके से फिर उसके बाद स्टूडेंट अपने आप ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर लेते हैं और अंततः वो मास्टरी गेन कर लेते हैं। यहाँ पे एक रेट्रोग्रेसिव, जो मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स में बताया था, रेट्रोग्रेसिव चेन वाला कॉन्सेप्ट होता है। अब इसको समझने के लिए बाकी दो प्रोग्राम्स तो बहुत सिंपल है समझने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमें 20 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम मैथमेटिक्स प्रोग्राम से वो सिखाना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। तो डेमोन्स्ट्रेशन कैसे देंगे, ऐसे है। तो ये स्टेप आपको डेमोन्स्ट्रेट करके उन्होंने दिखा दिया। आप सेकंड में वो आपको प्रॉम्प्ट करेंगे। प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है कि वो आपको यहाँ पे इतना स्टेप दे देंगे करके, अब वो आपको इस स्टेप को करने को कहेंगे, यहाँ पे आप करिए। फिर नेक्स्ट चेन में क्या कहेंगे, 20 × 20। अब ये वाला स्टेप भी दे देंगे और ये वाला स्टेप भी आपको करना होगा। और फाइनली जब आप इस तरीके से पहुंचोगे तो लास्ट स्टेप में आपको 20 × 20 टोटल मल्टीप्लाई करके दिखाना होगा। सो इस तरह का जो ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर आप बिल्कुल मास्टरी करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, फिर प्रॉम्प्ट करेंगे यहाँ वाले स्टेप्स में, ये वाले स्टेप आपके प्रॉम्प्टिंग के स्टेप्स हैं, और फिर लास्ट में आप रिलीज करोगे अपना कि प्रोग्राम की आपने इस तरीके से यहाँ पे इनटू को करना सीखा। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग। मैं आपको काफ़ी शॉर्टकट में बता रही हूँ, इसे बहुत एलैबोरेट में आप जब एमएड वगैरह करेंगे तो आप बहुत एलैबोरेट में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हो या एमए एजुकेशन कर रहे हो तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। आप अगर और जानना चाहते हो उसके बारे में तो देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग। सो ये 3 टाइप्स की प्रोग्रामिंग्स होती हैं, द लीनियर, द ब्रांचिंग एंड द मैथमेटिक्स। नाउ यूज़ ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। तो इस तरह के इस प्रोग्राम्स को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ इन टीचर ट्रेनिंग,
हम करस्पॉन्डेंट एजुकेशन में प्रोग्राम्स तैयार करके दे सकते हैं, बैंक्स में, इंडस्ट्रीज़ में, ट्रेनिंग आर्मी एरिया में है, हम प्रोग्राम्स रेडी कर सकते हैं। नॉट फॉर्मल एजुकेशन में से यूज़ किया जा सकता है, मास एजुकेशन में, सेल्फ एजुकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी इसे इन तरह के प्रोग्राम्स को यूज़ किया जा सकता है। But as everything has its own limitation, the programmed instructions materials also have their limitations. First of all, there is no student and teacher directly relations in the as per the classroom. So somehow there the connection and coordination lacks in the teaching learning process, because if a teacher is present in the class, he can easily elaborate any doubts of us. So एक classroom environment नहीं मिल पाता है. Second, it's quite boring because इंडिविजुअल आप दे रहे होते हैं, क्लासरूम वाला इन्वायरमेंट ही नहीं है। प्रोग्राम क्रिएशंस के लिए हमें हमेशा स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे, और हम हर तरह के सब्जेक्ट में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड एक लिमिटेशन ये भी है कि इट रिक्वायर्स मच एनर्जी, टाइम एंड मनी। सो these are the limitations of program instructions. So आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल explain it to you. Then thanks for watching Gyandhara. Please like, share and subscribe.